Morning everyone and welcome to your magic book session. Today is the introductory session and आज का session start करने से पहले we played this clip from this movie. किस किस को पता है ये कौन सी movie है जिसको हमने अभी share screen करके देखा था? Anybody knows the name? Yes? No? So it's called The Secret session. Today is yes, so the movies, it's a movie, it's a documentary, whatever you want to call it. It's called The Secret and जो जर्नी हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं वो उसका प्रीक्वल है. ठीक है, प्रीक्वल मतलब कि आप उस मूवी को, उस बुक को, आई सजेस्ट मूवी आप देख लें ताकि आपको ना थोड़ा किस किस को पता है व्हाट इट्स अबाउट. आप में से किस किस को पता है आज आप जिस सेशन में आए हैं, यू कम टुडे, what is it about? Let's get to know each other better. If you could introduce yourself, all the people on the call, just unmute yourself. अगर आप अपने आप को, आपका नाम, आप कहाँ से हैं. So let's get to know each other better. Can somebody unmute? Apurva Goyal ji, Geet Bhasin, if you can just unmute yourself and share about yourself. How did you get to know about this session and what are your expectations? Nice to see you, Shreya ji. Nice to see you. Hi, good morning. Nice. All right, very nice. Okay, so it's 7 o'clock. Welcome everyone. Welcome. Okay, before we start, सब लोग अपने आप के लिए really clap and welcome yourself into this journey. Clap for yourself, welcome yourself, raise your energies. Good, nice. Let's get to know each other better. Who are you and where are you from? Sukhdeep Kaur from Ludhiana. All right, very nice. What about others? Where are you from? Others, where are you from? I'm Shivam from Jalandhar. All right. Dharmendra ji from Nepal. Very nice. Geet ji from Delhi. Ritika from Noida. Kusum ji from Indore, MP. Very nice. आप में से कोई ऐसे हैं जो मैजिक बुक पहली बार कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने पहले नहीं करी है? Doing it for the first time. All right. Dishant Goyal from Gurgaon. Very nice. Somebody who's in this journey for the first time. I'm Vidhi Dhaka from Jaipur. All right. Ritika ji is doing it from the first time. Very nice. Apurva ji is doing it for the first time. Very nice. I believe I am also doing this journey for the first time because last book we did was in July month and it was mirror work. And after that 2 month का gap came and then I realized यार मेरे को तो सचमुच मैजिक का कुछ नहीं याद. मतलब याद है but in the sense you know आप में से भी जिन जिन लोगों ने मैजिक बुक पहले करी है आपने अनुभव किया होगा. आप जब जब इस बुक को फ्रेशली करते हैं, फ्रेशली मतलब like you're actually practicing what the book is asking you to do and not just हाँ मुझे सब पता है. अगर आप हाँ मुझे सब पता है करके करोगे, oh I know what this is, oh I know, then it may or may not work. However, if you do this book meticulously in the sense कि एक एक चीज जो ये कह रहे हैं उसको हम बिल्कुल वैसे करें the way it's asking us to, magics will open up. So now before we start, let's have some people who've done this journey before. If you can just unmute yourself and share that how was this journey for you and what did you accomplish out of your participation in the magic book? Anybody like that? जिन्होंने अपनी लाइफ में मैजिक्स अनुभव करे हैं इस बुक को पहले कभी प्रैक्टिस करके? Anybody like that? सब नए है क्या? अनम्यूट कर पा रहे हैं आप? पूजा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो दी, मैंने मतलब फील किया है पूरा, मैं अच्छे से नहीं कर पाई. एक्चुअली ज्वाइंट फैमिली तो बहुत
तो मतलब मैं इन्वॉल्व नहीं हो पाती हूँ, लेकिन मेरा मन रहता है, मैं ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ। और मैं देखती हूँ कि जो चीज मैं लिखती हूँ वाकई वो चीज हो जाता है, 2-4 दिन या 15 दिन के अंदर वही वही हो जाता है। मतलब कि अगर किसी के बारे में बहुत दूर वाले के लिए भी लिखा तो वो आ गया। और बहुत सारे मैजिक देखे, मनी के एरिया में भी देखे मैंने, कि मैंने सोचा तो उससे पहले पहले भी हो जाता है। मतलब अच्छा। हाँ, कोई ऐसे बहुत बिग वाला नहीं, लेकिन हाँ छोटे छोटे होते ही रहते हैं। मतलब मुझे विश्वास है, विश्वास हो रहा है, तभी मैंने इसको ज्वाइन भी किया। बहुत अच्छे। तो इस 30 दिन की जर्नी को आप बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा जैसे है, एंड जो आपके बड़े वाले सपने हैं उनको भी सच कीजिएगा। हम्म। हाँ, अभी तक लाइव नहीं किया था, अभी तक तो मेरा वैसे चल रहा था, मैंने यूट्यूब पे ही किया था। गुड। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत ये है। मैंने लाइव किया है। थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। हाँ जी। और कोई जिसने अपनी लाइफ में मैजिक्स अनुभव किए? हाउ वाज इट फॉर यू? यस मैम। हाँ जी। डिम्पल अग्रवाल। भाई, आप अपनी वीडियो ऑन करेंगे तो और अच्छा लगेगा। मैम बहुत बुरी हालत में हूँ। हमसे बुरी हालत क्या हो सकती है? सो के साथ मुझे सबकी ऐसी हालत होती है। सो क्यूट यू मैम। हाँ जी। मैं सबसे पहले मैं बहुत लकी हूँ। मैं हमेशा से सोचती थी कि डे 0 से मैं मैजिक बुक ज्वाइन कर पाऊँ, कभी नहीं कर पाई। अभी अरविंद सर का भी क्लास ज्वाइन करने का सोची, लेकिन नवरात्रा चल रहा था तो कर नहीं पाई। मतलब मैं कल से उनका क्लास ज्वाइन की हूँ और आज मैं बहुत लकी हूँ। और मैं आपको बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप फिर से मैजिक क्लास स्टार्ट किए और मैं आपका फर्स्ट डे से क्लास करना चाह रही थी और हो गया भगवान की कृपा से। मैं भगवान को बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ। अगर आज शायद मैं नहीं कर पाती क्लास, लेकिन भगवान ने कुछ मैजिक ही किया मेरे लाइफ में, जिसकी वजह से आज मैं ये क्लास कर पा रही हूँ डे फर्स्ट से। ये मेरा सपना था डे फर्स्ट से करने का, कभी भी मैं नहीं कर पाती थी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैजिक बुक को और आपको और आपकी पूरी टीम को मैम। थैंक यू डिम्पल जी, थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस जर्नी, एंड आई होप ये 30 दिन आप पूरे इसको वैसे ही कीजिए द वे इट्स डिजाइन, एंड अपनी लाइफ में और बहुत सारे मैजिक्स को लेकर आए। थैंक यू। थैंक यू मैम। और कोई लास्ट शेयरिंग बिफोर वी स्टार्ट? अच्छा, मैं अपने आप को भी इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है मुझे पहली बार मिल रहे हो। सो मेरा नाम एनी मुंजाल है। आई एम बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली। नहीं, अब तो गुड़गांव आ गई, सॉरी। सो आई एम बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव, एंड professionally I plan weddings, and we have a makeup and hair academy, so I manage the operations of that. फैमिली वाइज आई लिव विद माय फैमिली। पहले जॉइंट फैमिली थी जब हम दिल्ली में रहते थे, अभी लास्ट मंथ ही शिफ्ट हुई हूँ, तो ज्यादा कोई समय नहीं हुआ है। एंड so live with my family, my parents, my brother, and that's about me. Did my schooling from DPS Mathura Road. The reason why this magic book is so dear to my heart, and why I especially like to lead these sessions for the young people, is because I feel that when I was, सबको इंग्लिश ठीक है, ऐसा तो कोई नहीं है जिसको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही. It's okay. Yes, everyone? Okay. So the reason why I'm very passionate about having this magic book session is because जब मैं छोटी थी ना, when I was younger, I was in school, I remember, I think around, कुछ लोगों नहीं हो सकता एग्जाम्पल मेरा, मतलब मेरी लाइफ की शेयरिंग पहले सुनी हो. So I remember I was in 5th grade मैं थी, मेरी पीटीएम थी, एंड उस टाइम पे ना मेरा फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा बिगड़ गया था. मतलब you're growing up, आप नई नई मूवीज देखते हो, गाने देखते हो, you're curious, है ना. आसपास के लोग कभी कभार गलत गलत चीजें भी मतलब ट्राई कर रहे होते हैं, स्वेयर वर्ड्स ट्राई कर रहे होते हैं. तो आई रिमेम्बर मेरी उस पीटीएम में ना मेरी टीचर ने डांट लगाई थी मेरी मम्मी को, आज तक कभी नहीं लगाई, कि मैम आप आनी को ना प्लीज देख लीजिए, उसकी ना कंपनी ठीक नहीं है, she is using bad words, and उसके मार्क्स भी कम हो रहे हैं. And I was like, oh my god, this is so bad, and really ashamed of myself. But I didn't know what to do about it, because you're growing up, you don't know how to come out of it. So until this time that so I come from this school जहाँ पे ना scholar batch नाम की कोई चीज होती है, कि if you score a certain percentage of marks, then you get a scholar batch. So I still remember 5th class when mummy was, really looking down upon me, and that's when parallelly, not magic book, but I did this other program for young people. I participated. It was called Landmark Forum for Young People.
मैंने वो किया जिसके अंदर भी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली चीजें सिखाई गई थी, जहाँ पे जैसे आज आप यहाँ पे आए हैं, आप अपने कुछ ड्रीम्स बनाएंगे। तो उस टाइम जब मैं 12 साल की थी तो मेरा ड्रीम था कि यार मैं ना अगले साल स्कॉलर बनूंगी एंड आई वांट टू सी माय पेरेंट्स से ओ आई एम सो प्राउड ऑफ इट। एंड दैट वाज माय ड्रीम फॉर अ पर्सन एज यंग एज दैट। एंड ऐसा नहीं कि मैं ओवरनाइट बहुत होशियार बच्ची बन गई या मेरे में अल्टीमेटली बहुत ज्यादा अक्ल आ गई या एनीथिंग लाइक दैट हैपेंड, नो। बट using the steps, using the everything that we are going to learn over these 30 days, 6th क्लास में जब मैं पहुंची तो मैं सचमुच स्कॉलर बन गई। एंड इट वाज अ बिग शॉक फॉर मी बिकॉज आई वाज अ वेरी एवरेज स्कोरिंग स्टूडेंट। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत कूल है, इतनी आसानी से ये कुछ 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 चीजें करी। ये नहीं कि मैं अब घर जाके बहुत ज्यादा पढ़ने लग गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने कहा छोटी छोटी चीजें माइंडसेट चेंज करने से ये चीज अचीव हो गई, तो यार चलो कुछ और भी नया ट्राई करके देखते हैं। Then I thought that यार चलो मैं स्कॉलर बन गई तो if I want to be like the head girl of the school तो क्या वो भी बन सकते हैं। तो I used the sciences। उस टाइम पे it was not like a road map कि पहले ये पहले वो, क्योंकि तब मैजिक बुक नहीं आई थी। तब मैं जो सुनती थी, जैसे पेरेंट्स ने कुछ सिखाया, my parents both are very active practitioners of manifestation, so उन्होंने सिखाया, उनसे सीख लिया, बन गई। मैंने कहा यार ये तो बहुत कूल है, मतलब हेड गर्ल बन गई। फिर मैं और बड़ी हुई, स्कूल गया, कॉलेज एडमिशन्स के टाइम आए, काम करने का टाइम आया। मैंने कहा इसमें काम करके देखे यार, मेरे को इस तरीके का काम चाहिए जहाँ पे ना बहुत सारा घूमना इन्वॉल्व हो, और घूमने के साथ साथ ना पैसे भी मिल रहे हैं, लोगों की रिस्पेक्ट भी मिल रही है। आई एम वर्किंग लाइक माई ओन बॉस, किसी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आई वाज लाइक यार ऐसे मैनिफेस्ट करूंगी तो ऐसा भी काम आ जाएगा, वैसा काम भी आ गया। सो आई वाज लाइक वाओ, दिस इज अमेजिंग। Like anything that I want for myself is possible by simple practice of simple things. However, when I looked at the outside world, like my friends, my cousins, my peer group, and they were still dealing with a lot of things, तो मुझे ना बहुत ही वो लगा unfair कि यार मेरे को ये छोटी छोटी चीजें पता थी तो आज इतनी आसानी से लाइफ चल रही है, अगर बाकियों को भी पता होती तो उनकी भी लाइफ पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाती। So, and it's not like I'm very mahan or anything, not at all, not even close, still a work in progress, because I think as long as you're alive, there are always dreams that you want to accomplish. There's always more scope to grow. So I'm not saying anything like that about me, but I'm just saying आपके जो सपने हैं, जो सचमुच सपने हैं, मतलब जो burning desire है that this is something that I want, that I want, that I want. Well, this journey, I am welcoming you, inviting you. Thank you so much for being here. And अगले इन 30 दिनों के कोर्स के अंदर we will uncover for us ourselves, discover for ourselves कि वो कैसे आपको गाइड करते हैं। So meanwhile, before we start, आपको क्या लगता है ये अगले 30 दिन आप अपने लिए क्या लेने आए हैं? Whatever, whoever invited you to this journey, बट अगर आज आप यहाँ पे बैठे हैं, फर्क नहीं पड़ता आपके बॉस ने आपको यहाँ बिठाया है या आपके हस्बैंड ने या वाइफ ने या किसी रिश्तेदार ने या दोस्त ने, अल्टीमेटली अब आप यहाँ बैठे हैं, है ना। एंड आई एम प्रिज्यूमिंग एटलीस्ट आज का 1 घंटा आप यहाँ पे पूरा करके जाएंगे। तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं? व्हाट इज इट दैट यू वांट फॉर योरसेल्फ? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, क्या लेने आए हो, क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको अपने लिए, अपने 30 दिन 1-1 घंटा, दैट मीन्स 30 आवर्स अपनी लाइफ के देने जा रहे हो। आप लेने क्या आए हो? क्या पता है आपको क्या मिल सकता है? मेरी आवाज आ रही है? डोंट टेल मी मेरी शक्ल देखने आए हो। यस आ रही है मैम। ओके, शुक्राने की दुनिया देखने आए हो। ओके, हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, मनी, लव लेने आए हो। वेरी गुड। You want to learn the art of what? Urvaji? Peaceful mind lene aaye ho, okay? You want to see magics with magic book? That's nice, but in which area of your life do you want to see magics is my question. नई life create करने आए हो, बहुत बढ़िया। Fortune, health, wealth, बहुत अच्छे। अपने सपने को पूरे करने आए हो, बहुत अच्छे। करियर के अंदर मैजिक्स चाहिए, very nice, very nice, good. See, because देखो आप किसी भी जर्नी पे जाते हो, अगर आपको पता है कि आप उस जर्नी को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो तो इट इज प्रोडक्टिव,
है ना, आपको पता हो कि दिस इज 30 days, अच्छा मेरे को अगर ये चीज इसके बदले में मिल गई ना तो टाइम वसूल, इन्वेस्टमेंट वसूल, अभी जो असाइनमेंट्स करोगे असाइनमेंट्स को करना वसूल, है ना. Okay, to see what amiss to make the bigger happen. All right. You are so sweet, ma'am. How sweet of you. All right, let's start now. Let's start with today's chapter. We'll read in English. अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो ask. All right. Let's start. So today is the introductory chapter. And आपने देखा होगा आज का gratitude in your life. आज का You will know how to overcome. आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने एक मूवी को प्ले किया था. Not completely, like 5 to 7 minutes, the introduction of the movie we played. Anybody knows the name of that movie? It's called The Secret. Okay, so we will be sharing the link of that movie on the WhatsApp group. आप सब लोग आज आराम से अपना 1.5 घंटा निकाल के chill and watch that movie. Even if you've seen it before, doesn't matter. Okay, so अभी किसी के क्वेश्चंस तो क्या ही होंगे, अभी तो हमने कुछ शुरू ही नहीं किया, तो चलो शुरू करते हैं. और अगर उसके बाद आपको कोई क्वेश्चंस आए आप पूछेगा. एक चीज मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी, अपने लिए एक नोटबुक एंड पेन्स हैंडी रखिएगा सेशन के दौरान, क्योंकि कोई भी लाइन, कोई भी मैसेज, कोई भी असाइनमेंट आपको जो क्लिक करता है, जो असाइनमेंट होएगा वो तो आपको रिटन में मिलेगा ही, मगर उसके एडिशनली book से if you want to take notes, just keep a register handy. All right, let's start. The Magic by Rhonda Byrne. One word changes everything. For more than 20 centuries, words within a sacred text have mystified, confused, and been misunderstood by almost all who read them. अच्छा, एक चीज मैं पहले क्रिएट करना चाहूंगी before we begin. है ना, we have two kinds of people on this call right now. One is the kind of people who are even seeing the magic book for the first time. है ना, anybody like that? Just write down yes. You guys are lucky. जो लोग बिल्कुल पहली बार कर रहे हैं ना, you guys are lucky because you're doing everything like, oh, what's going to happen? What's next? You know, it's saying one word changes everything. Oh my God, what does everything mean? What all is it going to change? You know, that's how I expect you to participate. Second are the kind of people, including myself, who might think that we know what the magic book is about. And mind you, that is the biggest pitfall to fall in. All right, because if you like, one word changes everything. हाँ, मेरा घर, मेरे दोस्त तो बदल गए थे, पैसे भी बदल गए थे, but employees पे मैंने magic किया था, it didn't work. So I don't think it changes everything, but yeah, it definitely changes my brother and thing. No, that's not how you participate. I did gratitude, I did this. No. So see, the reason I say this is because आप जितना ज्यादा इस बुक को ऐसे पार्टिसिपेट करेंगे कि आपको कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, और ये मतलब ये जब बोल रहा है वन वर्ड चेंजेस एवरीथिंग, तो इसका मतलब भाई क्या क्या चेंज होने वाला है. एवरीथिंग मतलब मेरी शक्ल, मेरी नाक, मेरी बॉडी, मेरी फिटनेस, मेरा पैसा, मेरा करियर, मेरा स्टेट ऑफ माइंड, मेरे दोस्त, क्या क्या बदलने वाला है, मेरी छुट्टियां, मेरा क्या क्या बदलने वाला है भाई. ये तो एवरीथिंग की बात कर रहा है. So my expectation from you as a participant is that आप जो एक एक शब्द पढ़ रहे हैं, it's not just like everything. No, you have to be on the edge of your seat. You have to be on the edge of your seat, really listening close to. Bro, ये तो everything की बात कर रहा है. एक शब्द everything बदलने वाला है. ऐसा क्या है? You've got to build that for yourself. All right? Okay. Only a very few people through history have realized that the words are a riddle, and that once you solve the riddle, once you uncover the mystery, a new world will appear before your eyes. In The Magic, Rhonda Byrne reveals this life-changing knowledge to the world. Then, on an incredible 28-day journey,
She teaches you how to apply this knowledge in your everyday life. No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic is going to change your entire life. Yeah, so it doesn't matter whether you're somebody who has spent all his life in spirituality or whether you're someone who has absolutely no trust on, whether, or you're somebody, you're a young boy or you're a 80-year-old woman, doesn't matter. Doesn't matter whether you've done magic book 100 times before or whether this is your first time. Doesn't matter. Does not matter. Because the magic is going to change your entire life. Entirely. Provided you allow it. ठीक है? चलो uncover करते हैं. The Magic by Rhonda Byrne. By this means, you will acquire the glory of the whole world. These words are in the Emerald Tablet, circa 3000 to 5000 BC. Yeah, so a little context. The That tablet is the book that Rhonda Byrne had first read, from which she extracted the secret and then the magic and then henceforth all the other books. But that is the base. And today, the journey that you are entering into, this has the potential. I always like to use the word potential because उस potential को tap करना या ना करना is your personal choice. But हाँ, by this means, you will acquire the glory of the whole world. This means जो आज आप, जिस पे आपने आज पहला कदम रखा है, जिस पे आज आप आए हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, इस जरिए के थ्रू you will acquire the glory of the whole world. Glory of the whole world. What do you think that means? Glory का मतलब क्या होता है? What do you think glory means? Discover this for yourself. What do you think glory means to you? पूरी दुनिया की glory will belong to you. You will acquire that. Everybody will look up. I don't know what glory means to you. है ना? आप भी तो अपनी लाइफ में अगर आपका कोई सपना पूरा होगा, I'm sure it is because of, you're gonna get some glory around it, है ना? Maybe you're doing wonderful in career and you're like, सब लोग तालियां, oh, क्या कर दिखाया, मजेदार. Maybe you're earning certain kind of money and you're like, really stop and think. You are not here to listen to me. I saw some people on this call, किसी का video on the, they were like sitting like this on their bed. सामने टीवी चल रहा है, लैपटॉप बेड पे पड़ा हुआ है ना, ऐसे वो आधी नींद में सुबह 7 बजे वो बासियां मार रहे हैं. अरे भैया, ऐसे कहां से एक्वायर करोगे ग्लोरी को होल वर्ल्ड की? ऐसे थोड़ा ना होता है. So my humble request to everyone is really be on the edge of your seat. Yeah, you're going to give 1 hour of your precious life here. Like, you've got to be listening close to every single thing that this has to offer. circa 3000 to 5000 BC. Dedicated to you. May the magic open up a new world for you and bring you joy for your entire existence. That is my intention for you and for the world. Acknowledgements. When I first sit down to write a book, the creation begins as a joyful yet solitary one. It is just the universe and me. Then gradually the circle begins to widen, encompassing more and more people, all of whom contribute their expertise, until finally you are holding the creation of a new book in your hands. The following people were a part of the ever-widening circle of creation that allowed the magic to reach you. Thank you, thank you, thank you to my daughter Sky, who worked tirelessly side by side with me, editing, along with Josh Gould, who contributed his scientific knowledge and research skills to help me unite the discoveries of science with the words of religion. Thanks to my editor Cindy Black from Beyond Words,
for her straightforward editing approach and probing questions, which have made me a better writer. Thanks to Nick George for his creative vision, which captured the magic through the interior graphics and the front cover. To Shamus Hall and Carla Thornton at Goza Media, thanks for the final production of the graphics and the layout of the book. Thanks to the secret team who helped me take a new book into the world and who are the backbone of my work. In particular, my sister Jan Child, who heads up the entire publishing team, Andrea Kerr, who heads up our colossal creative team, Paul Harrington, and my sister Glenda Bell, who teamed up with photographer Rachel Kilpatrick and the rest of our team to create the magical pictures in this book. And thanks to the other secret team members whose behind-the-scenes work is invaluable. Don Zeig, Mark O'Connor, Mike Gardiner, Lori Sharappa, Corey Johansson, Chai Ling, Peter Byrne, and my daughter Haley. Thank you, thank you, thank you to my publishers, Atria Books and Simon & Schuster, to Caroline Reddy, Judith Kerr, Darlene D. Lillo, Twine Fan, James Parveen, Kimberly Goldstein, and Isol Shaw. I'm blessed to have such an amazing team of people. Thank you, thank you, thank you to Angel Martin Vilayos for his spiritual. So just for context, if you didn't know, this book आपको जिसने भी इंट्रोड्यूस किया होगा इस बुक में उन्होंने आपको बताया होगा that the practice of this book involves gratitude, right? Involves being thankful. So अभी जब हम ये acknowledgements पढ़ रहे हैं जिसके अंदर Rhonda Byrne is acknowledging her team members, her editor, the legal people, the designer, everybody. So I don't want you to just be like, oh, fine, whatever. But rather, if you pay attention to the way, the mannerism in which she's not just saying, oh, thank you for your good job. No, but she's actually going down to look at what is it that she's grateful for. Like, thank you, thank you, thank you to Angel Martin Velayos for his spiritual guidance, love, and wisdom. So like, this is what he offered to her, for which she's really thankful to him, right? I'm thankful to my sister Pauline Vernon and my friends and family for their continued support and enthusiasm for my work. So she didn't just say, oh, thanks, Pauline, you're the best. No, she actually went down to look at that, oh, it's the enthusiasm that she offered to me that I'm really grateful for. So while we're reading this, it's nice if we can look at, the mannerism, the way in which the author of this magic book is conveying. Guidance, love, and wisdom to my sister Pauline Vernon and my dearest friends and family for their continued support and enthusiasm for my work, and with the deepest gratitude to those great human beings of centuries ago who discovered the truths of life and who left their written words so that we might discover them at exactly the right time. That indefinable life-changing moment when we have the eyes to see and the ears to hear. Contents. Do you believe in magic? A great. This is ये जो contents है मतलब अगले 30 दिनों में हम क्या-क्या पढ़ने जा रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है ताकि पता हो ना आगे का रोड मैप क्या है हम क्या-क्या कवर करेंगे. Tree is revealed. Bring the magic into your life. A magical book. Day 1, count your blessings. Day 2, the magic rock. Day 3, magical relationships. Day 4, magical health. Day 5, magic money. Day 6, works like magic. Day 7, the magical way out of negativity. Day 8, the magic ingredient. Day 9, the money magnet. Day 10, magic dust everyone. Day 11, a magic morning. Day 12, magical people who made a difference. Day 13, make all your wishes come true. Day 14, have a magical day. Day 15, magically heal your relationships. Day 16, magic and miracles in health. Day 17, the magic check. Day 18, the magical to-do list. Day 19, magic footsteps. Day 20, heart magic. Day 21, magnificent outcomes. Day 22, before your very eyes. Day 23, the magical air that you breathe. Day 24, the magic wand. Day 25, cue the magic.
Day 26, magically transform mistakes into blessings. Day 27, the magic mirror. Day 28, remember the magic. Your magical future, the magic never ends. About Rhonda Byrne, except from the secret, except from the power. Yeah, so going through that content page really tells you that, it will be covering all different aspects that there are to cover. Starting from your money, your health, relationships, magic ingredient, आपका heart, आपकी health, आपके पैसे नहीं है तो magic check भी आएगा. कोई गलती कर दी, गलती का बहुत अफसोस हो रहा है तो magically transform mistakes into blessings भी आएगा. आपने, so whatever it is, if you really look at the contents, मोटा मोटा whatever it is that you're dealing with, है ना, आपको किसी चीज की बहुत नेगेटिविटी सता रही है, you're not able to come out of that negativity. So there's a chapter which says, magically, the magical way out of negativity. So all these things, आपका career के अंदर you need support, तो उसके अंदर works like magic. So all these chapters are designed in such a way, the book is designed in such a way, तभी मैं कहती हूँ, ऐसे मत करना कि मैं आज सिर्फ एक ही chapter, नहीं. The book is a wholesome package in itself for you and all areas of your life to become magical. आगे. Do you believe in magic? दो Question है, पहले हम उसका आंसर करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़े. Question पूछा इसने आपसे. Do you believe in magic? Yes, no. Yes, no, maybe. Write down in the chat box. Do you believe in magic? Yes, no. Yeah, let's stick to yes, no, not maybe. Yes or no? Can be no also. I'll not scold anyone. Yes? All right. Yeah. Okay, wonderful. We have one no, all yeses. Very nice. Very nice. Okay. Good. Because if you don't believe in magic, you will never find it. You can do this book a zillion times, but it will not work if you don't believe on it. Okay, so the first prerequisite, देखिए, before this book has even started, before this book has even told you what the magic is about, उसने सबसे पहले तो आपसे ये पूछे, भैया विश्वास करते हो, भरोसा करते हो कि काम करता है? क्योंकि अगर नहीं भरोसा करते तो नहीं काम करेगा, तो फिर आप इस बुक से लॉग ऑफ कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, I can't convince you to believe in magic. It's your personal choice, right? Who don't believe in magic will never find it. These are the words from Roald Dahl, who was a writer. Remember when you were a child and you looked at life in total wonder and awe? Life was magical and exciting, and the smallest things were utterly thrilling to you. You were fascinated by the frost on the grass, a butterfly flittering through the air, or any strange leaf or rock on the ground. I want you to think, अगर आपको अपना बचपन याद आ रहा है, आप अपना याद कीजिए. If you have kids, you can remember their childhood. Do you remember when we were kids? I can remember myself. We were very small and somebody asked you, क्या करना चाहते हो बड़े होके? बच्चों को ना बड़ी excitement होती है बड़े होने की. क्योंकि उनके दिमाग में ना इतनी सारी चीजें होती हैं जो वो करना चाहते हैं, जो कि लॉजिकली एक सिर्फ बड़ा आदमी कर सकते हैं. जैसे मैं बड़े होके यहाँ पे घूमना चाहती हूँ, मैं बड़े होके इससे मिलना चाहती हूँ, इस प्रेसिडेंट से मिलना चाहती हूँ, मैं बड़े होके मून पे जाना चाहती हूँ. मैं यस नो एनीबडी रिमेम्बर्स? आपको अपने ऐसे सपने याद है जब आप छोटे थे? Like every small thing would get you excited. You'd see a butterfly coming towards you, flying towards you, touch you, उसका print आपके हाथ पे आ गया जब आपने उस butterfly को पकड़ा. That would leave you so excited. You'd go back home running with joy. मम्मी आपको पता है मैंने आज butterfly को पकड़ा, उससे देखो ऐसे आ गया. आपने कोई लीफ देखा, लीफ के अंदर कुछ ऐसे शेप बना हुआ था, वो लीफ, मम्मी देखो ये देखो क्या मिला मुझे. Yes, no, anybody remembers this? Doesn't remember? Yes, no. Okay, I'm not talking to myself. I'd really appreciate if you could just write down yes or no. 73 people on the call and 2 replies. That's not fair. Come on. Let's keep it interactive. Cool. Yeah, right? So, let's move forward. You were full of excitement when you lost a tooth.
because it meant the tooth fairy would be coming that night and you would count down the days to that magical night of Christmas. Even though you had no idea how Santa Claus could get to every child in the world in one night, somehow he did it. And he never let you down. Reindeers could fly. There were fairies in the garden. Pets were like people. Toys had personalities. Dreams came true. And you could touch the stars. Your heart was full of joy. Your imagination knew no limits. And you believed that life was magical. There's an exquisite feeling many of us had as children that everything is good, that every day promises more excitement and adventure, and that nothing could ever thwart our joy for the magic of it all. So do you remember this phase of your life? It might be very, very long ago. But do you remember that once upon a time you used to be this kind of a person? Yes, no. Like when you'd be sitting in the, आप ऊपर clouds पे देखते हो and you'd see some different shape of the clouds and you'd just be like, oh my God, this is so cool. It looks like a horse. Mama, look, that's a horse. Or, you'd go out, you'd look at stars and the stars would form a shape and you'd be like, oh wow. या फिर जब क्रिसमस होता था तो आपको सोचना भी नहीं पड़ता था, मतलब ऑब्वियस सा था यार कि गिफ्ट मिलेगा, कौन लाएगा, कैसे लाएगा, सबको सेम दिन पे कैसे मिल रहे हैं, उस सैंटा क्लॉज का आपका एड्रेस कैसे पता है, आपको उस समय क्या चीज चाहिए वो सैंटा क्लॉज को कैसे पता है, क्या फर्क पड़ता है, गिफ्ट मिलेगा मतलब मिलेगा, है ना। सब चीजें कितनी सॉर्टेड थी ना। हाँ, मैं जो भी करना चाहता हूँ सब बन सकता हूँ यार, डीजे बनना चाहता हूँ बन सकता हूँ, पियानिस्ट बनना चाहता हूँ बन सकता हूँ, पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ घूम सकता हूँ, किसी से मिलना चाहता हूँ मिल सकता हूँ, किसी से बात करना चाहता हूँ उसमें क्या बड़ी बात है, कर सकता हूँ, everything is possible. Duh. And nothing could ever thwart our joy for the magic of it all. हमें था, अरे आपको अगर याद, मुझे अपना याद आता है, when I was really young, I was like, अरे लाइफ कितनी सॉर्टेड है यार, मतलब ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे होगा, बड़ी हो जाओगे तो ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी, वैसे करूंगी, सिंपल, कितनी एक्साइटिंग है लाइफ, है ना। But somehow, as we grew into adults, responsibilities, problems, and difficulties took their toll on us. But somehow, as we grew into adults, responsibilities, problems, and difficulties took their toll on us. We became disillusioned, and the magic we once believed in as children faded and disappeared. It's one of the reasons why, as adults, we love to be around children, so that we can experience that feeling we once had, even if it is just for a moment. And it's not all I'm here to tell nowadays. आजकल तो बच्चों को भी इतनी टेंशन। Done speaking. What happened, Sridevi? Do you want something? Okay. So as it says, as you grow into adults, it makes you, responsibilities and this and that. I believe today a lot of kids face also a lot of tension in this and that. So, when it says thwart our joy, sometimes this is gone by the age of 5, 6, 7. Khatam. After that, it's only, oh my God, how much marks am I getting? Oh my God, if I don't get marks, mommy will scold me. Oh, if this doesn't happen, then what will happen to my career? I will not get a good job. I'll not get good money. I'll not. है ना? So it's not age bound. कि age के बाद ही ये feeling आता है लोगों को tension का, stress का. But I am here to tell you that the magic you once believed in is true. And it's the disillusioned adult perspective of life that is false. Okay. that the magic you once believed in is true. And it is the disillusion about adult perspective of life that is false. The magic of life is real, and it is as real as you are. In fact, life can be far more wondrous than you ever thought it was as a child, and more breathtaking, awe-inspiring, and exciting than anything you have ever seen before. When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. Then you will wonder how you ever could have given up in believing in the magic of life. Yeah. So this is basically saying,
the adult perspective we have about life. Like this is from where this book will start. Adult perspective क्या होता है normally? अरे अगर तुम स्ट्रेस नहीं लोगे बेटा थोड़े सीरियस हो जाओ लाइफ को लेके, अगर सीरियस नहीं रहोगे स्ट्रेस नहीं लोगे तो फिर लाइफ का क्या होगा तुम्हारी, एकदम है ना, या फिर इतना हंस क्यों रहे हो, थोड़ा सीरियस हो जाओ, मतलब दिस इज व्हाट आई हैव नॉर्मली हर्ड, है ना। और क्या होता है एडल्ट पर्सपेक्टिव्स, बेटा यू गॉट सम रिस्पांसिबिलिटीज फॉर द फैमिली, आपको तो जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज ही करना होगा बेटा, अपने दिल छोटे रखो, सारे सपने सच नहीं होते हैं। एडल्ट पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ, है ना बेटा, यू गॉट टू, this book is starting from that this adult disillusioned perspective you have about life is false, and the perspective you had when you were a child, you know, that oh this is what I want to do and that, that's what we learn, discover करते हैं, है ना, किसी भी चीज को फेंकते नहीं है। अगले 30 दिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी आपका एग्जिस्टिंग माइंडसेट माइंड फ्रेम है उसे उठा के हम साइड पे रखते हैं, एंड we'll try on, you know, like we try on new sunglasses for a new color perspective. Similarly, we'll try on a new perspective of what this magic book has to tell us. Yes, are you open to it? You may not see reindeer fly, but you will see the things you've always wanted to appear in before your eyes, and you will see the things you've dreamed of for so long suddenly happening. You will never know exactly how everything weaved through together for your dreams to come true, because magic works in the invisible realm, and that is the most thrilling part. Are you ready to experience the magic again? Are you ready to be filled with awe and wonder every day like when you were a child? Get ready for the magic. Our adventure begins 2000 years ago when life-changing knowledge was hidden within a sacred text. No, this is a question that I need to ask everyone on this call. देखो यहाँ पे ये आपको ये कह रहा है, मतलब हो सकता है रेनडियर्स ना उड़े जैसे मूवीज में देखते हैं, मगर आपके जो सपने हैं जो सचमुच आप चाहते हैं, है ना, हो सकता है आप इतने समय से कोई you've been wanting a certain deal in your life to happen, or you've been wanting to meet a certain kind of a person for a long while, या maybe आपके कोई existing relationships हैं जिसके अंदर आप चाहते हो कि यार इसी के अंदर शांति आ जाए, पीस ऑफ माइंड आ जाए, अंडरस्टैंडिंग आ जाए, कंपैशन आ जाए, है ना, हो सकता है आप जॉब कर, अच्छा आई डिडंट आस्क द एज ग्रुप ऑफ द पीपल, एवरीबडी कैन यू राइट डाउन योर एज सो दैट आई नो व्हाट ऑल ages of people we have on this call, तो मैं examples थोड़ा उस हिसाब से दूंगी. Everybody, if you could just write down your ages so that I know what all we have here. Okay, early 20s, 30s, 8-year-olds, 15, 20, 30, 36, 25. Okay, all right. So I'll keep the examples like as a college going and early job working student, okay? Yeah, so similarly हो सकता है आपने job application करनी है, आपने कहीं पे job पे जाना था, job ढूंढ रहे हो आप, है ना, हो सकता है आपको एक सर्टेन काइंड ऑफ मार्क्स चाहिए अपने स्कूल के अंदर, हो सकता है आपको आपके फ्रेंड्स आजकल आपके साथ बहुत ही रूड हो रहे हैं, यू डोंट लाइक इट, है ना, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बेटर बिहेवियर चाहते हो, व्हाटएवर इट इज दैट यू वांट, दैट यू हैव बीन वांटिंग, सचमुच वांटिंग, है ना, सो गेट रेडी फॉर द मैजिक, द एडवेंचर बिगिंस 2000 years ago. Let's go. Good. A great It doesn't matter, मैंने ना उसमें लिखा था for young people, और मैंने ना young people के बाद कोई एज ग्रुप नहीं लिखा था कि किस एज ग्रुप के लोग इसमें आ सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जिसके भी इंसान की यू नो माइंडसेट अपने आप को वो माइंडसेट से यंग समझता है, वेलकम टू यंग पीपल, ऑल्दो द एग्जांपल्स विल कीप एज यू नो जितनी मेरी एज ग्रुप है उतने तक की, मगर एवरीबडी इज वेलकम. Okay, so now we start with the next chapter, which is a great mystery is revealed. Chali, but then mystery is revealed. The following passage comes from the Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it has mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have,
even what he has will be taken from him. You have to admit that when you read the passage, it appears just unjust, as it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer. But there's a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover, and when you know it, a new world will have opened up for you. The answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in one hidden word: gratitude. Whoever For like we are just starting off with this book, ठीक है? अभी तो आज तो सिर्फ introduction ही है और introduction भी हमारा I think आज और कल में divide होएगा. But what I want to say is that ये जो book है ना, ये don't just go on the face of it because it may have certain hidden meanings to it. जैसे आप कभी आपने jigsaw puzzle कभी solve की हो या you know, तो उसके अंदर क्या होता है, like you put in one missing piece and then the whole you know mystery uncovers. आपने कोई वैसी मूवी देखी हो, इट्स लाइक आप उसके अंदर बाकी सब ठीक था है ना, वो उसके अंदर कोई आपने स्टोन लगाया एंड देन सडनली द होल मिस्ट्री unfolds itself. Similarly, in this also, like जो ऊपर उन्होंने लाइन दी थी, whoever has will be given more and he or she will have in abundance. Whoever does not have, even what he or she has will be taken from him or her. है ना, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ ये मत बोलना कि यार जितना एनी ने बोल दिया उतना ही समझ में आ गया. आई एम टेलिंग यू, मेरी बोली हुई बात ना सब भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाती हूँ. अल्टीमेटली क्या रहता है, आपने अपने लिए क्या एक्सट्रैक्ट किया. हमने अगर आज यहाँ पे 10 पेजेस पढ़े, आपको 10 पेजेस नहीं याद रहेंगे, मगर उस 10 पेज में से एक लाइन या 2 लाइन जो आपको लगा, ओ दिस इज समथिंग दैट यू नो आई कुड टेक इट इन माय लाइफ, ओ दिस इज समथिंग दैट आई डेफिनेटली नीड इन माय लाइफ. ओ उसने बोला यार एडल्ट पर्सपेक्टिव डिसइल्यूजन, यार मेरा तो आजकल एडल्ट पर्सपेक्टिव काफी स्ट्रॉन्ग बन रखा है यार, क्या ये मैजिक बुक सचमुच मुझे उस एडल्ट पर्सपेक्टिव को लेट गो करने में मदद करेगी. चलो, or you know whenever that perspective comes up, Arey Annie, it's just you know a disillusioned adult perspective that's asking you to do things this. I don't know. ठीक है, I am telling you one thing, अगर आज हम यहाँ पे 70 लोग इस कॉल पे बैठे हैं ना, हम में से कोई भी सेम चीज के लिए नहीं बैठा है, सबको अलग अलग चीजें चाहिए. जो मैं ढूंढ रही हूँ is not what you are looking, is not what your husband is looking, is not what your child is looking. ठीक है, so really I will suggest जब ये रीडर बुक पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ आप भी पढ़ें, ठीक है, like read it out aloud along with. has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. By the revelation of one hidden word, a cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they ever were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more, and what you do have, you will lose. And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words. If you are grateful, you will be given more, and you will have an abundance. From the Quran, promise of gratitude is equally emphatic. And remember, when God proclaimed, if you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily, my punishment is indeed severe. It doesn't matter what religion you follow or whether you are religious or not. These words from the Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. They are describing a fundamental law of science and of the universe. Yes, this is not a religious book. This is not a, no, doesn't matter whether you're religious, you're an atheist, doesn't matter at all. Doesn't matter whether you believe or don't believe or which God you believe, doesn't matter. This book is like the law that we will be learning in this book is the law of the universe, which applies equally to everybody, irrespective of gender, caste, country, age, doesn't matter. Chali. It's universal law. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. According to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of the planets, like attracts like. It's because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together.
as well as the substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so whatever you think, whatever you feel, you attract to you. If you think, I don't like my आप में से किसको पता है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? और जिसको पता है राइट डाउन यस, जिसको नहीं पता राइट डाउन नो. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी, मतलब अगर आपको उसने देखो, अगर आपने स्कूल में साइंस पढ़ी थी तो उसके अंदर ना बताते हैं कि हर चीज, लाइक से फॉर एग्जांपल इफ आई हैव दिस पेन, इस पेन को अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो यू विल सी इट्स मेड अप ऑफ मल्टीपल मॉलिक्यूल्स, एंड इफ यू लुक फर्दर zoom in, so every molecule is made up of atoms, right? And if you look further in, then it's electrons, protons, neurons, and then if you look further in, then it all comes down to being energy. But if you look at it, if it is just energy at the end, it's like it's not really stuck together. Matlab, it's like different particles of energy जो कि इकट्ठे होके in this case looks like a pen, looking like keys, my hair, this thing I'm wearing, everything. This thing ki bachi kada कहते हैं. Sorry. So whatever it is, right? This jacket that I'm wearing, every single thing is made up of energy if you look it up. मगर अगर ये different particles थे तो ये इकट्ठे चिपके क्यों हैं? ये disperse क्यों नहीं हो गए? Dismantle क्यों नहीं हो गए? इकट्ठे क्यों चिपके हुए हैं? What is that force of attraction? That is the law of attraction. Simple. It's simply saying that every single thing, when you look deep down, is made up of same element, which is energy at its root. And those different particles are held together. They are held together because of the law of attraction. Okay. Law of attraction, अभी हम इसके अंदर आगे पढ़ेंगे. मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, आपकी आज की असाइनमेंट मैं आपको दे रही हूँ, आपका आज का होमवर्क दे रही हूँ. आप सबने आज सीक्रेट मूवी देखनी है. इंग्लिश में देखे, हिंदी में देखे, जैसे आपकी मर्जी है उसमें देखे, मगर आपने आज सीक्रेट मूवी देखनी. यूट्यूब पे अवेलेबल है, नेटफ्लिक्स पे थी इंग्लिश में, अभी पता नहीं, बट यूट्यूब पे तो है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. So, I haven't got enough money. I can't find my perfect partner. I can't pay my bills. I think I'm coming down with something. He or she doesn't appreciate me. I don't get along with my parents. My child is a problem. My life is a mess. Or my marriage is in a trouble. Then you must attract more of those experiences. But if you think about what you're grateful for, like I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, or I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel the gratitude, the law of attraction says you must attract more of those things into your life. It works in the same way as metal being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic. And the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It is universal law. या सो अभी सिर्फ समझने के स्तर पे, बाकी तो आज आप सब लोग सीक्रेट मूवी देखेंगे. आप जो कह रहे हैं, नहीं, आप जो सोच रहे हैं, आपके थॉट्स, आप जो बोल रहे हैं, आपके मुंह से जो निकल रहा है, आप जैसा महसूस कर रहे हैं, is directly related to the life that you are creating for yourself. All right. So if you say, oh, this sucks, oh, this doesn't work, I've done so much, it doesn't work. You thinking obviously it doesn't work, you saying it doesn't work, and you really feeling, oh, it doesn't work, is creating directly proportional according to the law of attraction. That thing will not work. Okay. Versus if you're giving your attention to something that works, even if it's a little bit, like for example, oh wow, आज तो मम्मी ने इतना अच्छा खाना बनाया. It's something that works. You thought about the good food. You saying about, wow यार मम्मी ने कितना अच्छा खाना बनाया था यार, बहुत टेस्टी था, and you feeling यार सचमुच कितना अच्छा था. You staying in that zone will attract more and more अच्छा खाना. Simple. Very lame example, very lame example, but every area of your life this rule is applying. Okay, similarly applies to say money also. If you're feeling
यार कितने ज्यादा पैसे हैं यार, कितने खर्च करने हैं, देख इधर भी खर्चा कर दिया, उधर भी खर्चा कर दिया, इधर भी आ गया, देख यहाँ से पैसे आने थे। इफ यू आर थिंकिंग दैट खर्चा ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है, पहले आपने थिंक किया, आप हो सकता है बोल भी रहो यार देख खर्चे तो ज्यादा हो गए इस महीने में यार देख, एंड यू आर फीलिंग that oh my god the expenses are greater than the income, you will attract more and more circumstances where expenses will be greater than income versus right. So अभी सिर्फ सुन लीजिए, समझ लीजिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप सीक्रेट मूवी देखिए, उसमें अच्छे से इसको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ में, मनी में, हेल्थ में, करियर में, रिलेशनशिप्स में, सपनों में, एवरीथिंग में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. इवन इफ यू हैव सीन द मूवी बिफोर, सी इट अगेन. You will have heard sayings like, whatever goes around comes around. You reap what you sow, and you get what you give. Well, all of those sayings are describing the same law, and they are also describing a principle of the universe that the great scientist Sir Isaac Newton discovered. Newton's scientific discoveries included the fundamental laws of motion in the universe, one of which says, every action always has an opposite and equal reaction. When you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says, every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving. And what you receive will always be equal to the amount of gratitude you have given. This means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving, and the more sincerely and the more deeply grateful you feel, in other words, the more gratitude you give, the more you will receive. All right, so we stop here today. But जो last passage था, it talks about the Newton's third law of science, right? Every action has an equal and opposite reaction. तो आप क्या दे रहे हैं, कहते हैं ना, ये हिंदी की कहावतें भी होती हैं, आप जो देंगे वो लौट के आपके पास घूम के आएगा. ये आपने बातें तो सुनी होंगी, मगर बातें सुनना एक चीज होती है, मगर उसको अपने जीवन में एक्चुअल में देखना, इम्प्लीमेंट करना कि वो कैसे आपके लिए या तो आपको अपने सपनों के क्लोज लेके जा रहा है या दूर लेके जा रहा है. प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उस चीज का इन 30 दिनों के अंदर हम उसी की प्रैक्टिस करेंगे. So thank you everyone for being in this practice. Before we take questions or sharings, we'll do this practice of gratitude. सब लोग अपने हाथ जोड़े, आंखें बंद करें, and give your gratitude for any one thing that you are grateful for. आज आप उस व्यक्ति के लिए grateful हो सकते हैं जिसने आपको इस जर्नी में दिया. Thank you very much. आपकी वजह से आज मैं इस अपनी लाइफ को जादुई बनाने के पहला कदम लिया. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस ब्यूटीफुल जर्नी में इंट्रोड्यूस किया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. So thank you everyone for being in this journey. हाँ जी, अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है जो हमने अभी तक पढ़ा उससे लेकर, या आप में से जिसने पहले मैजिक बुक करी है आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं एंड आप पूछ सकते हैं या शेयर कर सकते हैं. थैंक यू एवरीवन. इट्स गुड टू सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट एज ग्रुप्स. आपने ज्वाइन किया है यहाँ पे, तो जिन जिन लोगों ने आपको इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज इट वाज वेरी शॉर्ट नोटिस, yesterday only you got to know about magic book starting today, मगर आपकी कमिटमेंट अपनी लाइफ को और मैजिकल बनाने की is very commendable. So thank you so much. हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस? किसी की शेयरिंग? लेट्स हैव सम शेयरिंग सर, जिन्होंने पहले कभी प्रैक्टिस किया होगा and you want to share. Thank you ma'am, thank you for the opportunity, thanks a lot. मुझे शेयरिंग करनी है. मैंने कल ही मिस्टर मुंजल को सुना था और कल मैंने कन्या खिलाया. तो पहले मुझे बहुत ढूंढना पड़ता था कन्याओं को. कल ऑन सारी कन्याएं आके बैठ गई और कल तब मैजिकल हुआ. मतलब वो लोग खाते नहीं है तो वो खुद खाने लगे. वो सब बोल रहे थे अरे वो ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, तो वो मांग मांग के खा रहे थे. वो जो खुशी जो मिली, और फिर सबको मैंने बैठ के बोला कि आपको सिर्फ अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, उनको थैंक यू बोलना है. Small thing, but there should be some takeaway, and I felt very happy, and I'm very thankful to the complete family who I have joined, and I'm grateful to God that I am with you. I'm listening to you. Thank you, thanks a lot. Dhanyawad. Thank you so much.
थैंक यू। एंड ये बहुत अच्छी चीज है दिया जी ने जो शेयर की। तो आप जब इस प्रैक्टिस को करेंगे ना, तो आपको अपने जीवन में छोटे छोटे बड़े बड़े जादू दिखने शुरू हो जाएंगे। जादू क्या होता है? जो चीज जो पहले संभव नहीं थी और अब खुद ब खुद हो रही है, उसी को इंसान जादू कहता है। ठीक है, जादू कोई बड़ी या छोटी चीज नहीं होती है। जादू सिंपल होता है, जो पहले आज तक कभी नहीं हुआ, इतिहास में नहीं हुआ, वो होने लग गया, चमत्कार हो गया। आपके जीवन में जितने भी ऐसे जादू आएंगे, आप उनके लिए जितना ज्यादा थैंकफुल फील करेंगे, उससे डायरेक्टली आपकी लाइफ में जादू और ज्यादा बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू दिया जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग विद अस। और कोई जो शेयर करना चाहेंगे? हाउ वाज दिस जर्नी? आपने अगर पहले कभी करी हो, आपने अपनी लाइफ में क्या क्या क्रिएट किया, हाउ हैज दैट बीन फॉर यू? ऑलराइट, Can ठीक I है। share? Can I share it quickly? Yes. Annie? So good morning, everyone. I'm repeating this course, and I'm so lucky that I'm doing this course again with Annie. मैंने मिरर वर्क किया था Annie के साथ में, and I'm so grateful. I really enjoy the journey. In this last जो मैंने सेशन किया था मैजिक बुक रीडिंग का, the experience has been terrific on two areas. हर चीज में पॉजिटिविटी देखने लग गया हूँ, पहली चीज. And second thing is, I treat humans and I don't expect more from them. And especially the best thing that has happened to me is I had grudges against few people in my life. It could be any sphere of my life, personal, social, business. मैं उनसे काफी हद तक बाहर निकल गया हूँ. Though it is still taking some time to clear that mental block. But yes, with diligent practice of applying gratitude to every situation, I think I can easily overcome those remaining mental blocks as well. So I'm so thankful to the universe. The person who introduced me to the last magic book reading session, which was conducted by Sarika Joshi. And I'm so grateful that I'm doing this course again. And I'm thankful to everyone who joined at my, request. Ki kar lo. This will change your life perspective, and you'll become more happier and calmer person. So thank you, everyone. Thank you, Annie. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much for inviting your loved ones. Thank you. Okay, so I think with that we complete today's chapter. ठीक है, आपसे कल मुलाकात होगी. कल भी हम इंट्रोडक्शन को ही कंप्लीट कर. इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि अगले 28 दिनों में क्या होने वाला है, ये मैजिक बुक क्या है, आपके सपने क्या है. मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आज की असाइनमेंट में आपने सीक्रेट मूवी देखनी है और आपने अपने लिए एक फ्रेश रजिस्टर अपने साथ कल जब आप आए तो साथ लेके आइएगा, रजिस्टर और पेन. ठीक है, so thank you everyone for being in this journey. Thank you so much. See you all tomorrow. Have a magical day ahead. Thank you so much.